आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मिशिगन से आज जो है वो दिवाली का फेस्टिवल हुआ है जो कि सेनेटर वेबर और रुनस्टेड ने होस्ट किया है। दिवाली का रिसेप्शन इन कैपिटल, और वहाँ पर हम सारे जो लोग हैं हिंदू कम्युनिटी के अराउंड द ग्लोब कैपिटल बिल्डिंग में गए और वहाँ पर हमने जो है वो आज दिवाली का जो रेजोल्यूशन था उसमें शिरकत की। अमेरिकी रियासत मिशिगन की स्टेट कैपिटल बिल्डिंग के अंदर जो कि सेनेट की बिल्डिंग है उसमें जो है वो इस वक्त अमेरिका के मिशिगन रियासत में बसने वाले दुनिया भर के हिंदू जो कि इस बिल्डिंग में अभी पहुंच रहे हैं, और आज का जो प्रोक्लेमेशन सिस्टम और इसके साथ साथ जो आज यहाँ पे करारदाद यानी रेजोल्यूशन जो है वो पास की जाएगी उसके बारे में उसको देखने के लिए और उसमें शिरकत करने के लिए जो सेनेटर वेबर और रजिस्टर की तरफ से जो इनविटेशन है उसके ऊपर ये सारे हिंदू कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं और इसमें शरीक होंगे और आज की इस तकरीब के विटनेस बनेंगे। तो चलते हैं सेनेटर वेबर की जो रेजोल्यूशन उन्होंने पेश करना है उसको सुनते हैं आज की इस सेनेट बिल्डिंग के अंदर, सेनेट के अंदर होने वाली आज की तकरीब। Colleagues, I invite you to join me today in recognition of Diwali and ask for your support of Senate Resolution 79 to acknowledge the historic, cultural, and religious significance of this wonderful festival. Diwali is celebrated by more than 1 billion Hindus, Sikhs, and Jains around the world each year, including our Michigan neighbors who identify with these traditions. Diwali, a shortened version of the Sanskrit word meaning row of lamps, is often translated in English as the Festival of Lights. Diwali is a time marked by qualities of togetherness, family, and community. It is a special time for charitable giving and selfless service. Diwali celebrants will light small oil lamps and place them around their homes with prayers for health, wealth, knowledge, peace, and balance. The rose lamps are said to symbolize the light within the individual that rids the soul of the darkness of ignorance. This wonderful reminder that light triumphs over darkness, that good triumphs over evil, is a theme celebrated with many of our individual faith traditions. Hope is something we all share. Hope is a force of universal good. That is why I ask for your support of this resolution and our shared commitment to celebrate diversity of experiences and religious acceptance. I ask you to join me in recognition that Diwali's message of tolerance, compassion, and acceptance resonates with the ideals of the American spirit. Let us express together our respect and admiration for all those who celebrate Diwali throughout the world and in our own communities. Diwali begins November 12th this year. May all who celebrate do so with peace and joy. कलमात जो हैं वो सुन पा रहे हैं कि वो अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआगो भी हैं और उसकी तरक्की के लिए कोशिश करने का भी अज़म कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रमेश जयपाल। तो बने रहिए। आज की इस कार्रवाई में मैं आपको दिखाता हूं कि यूएस में क्या, इस मिशिगन स्टेट में आज दिवाली के हवाले से जो फंक्शन है उसमें क्या हो रहा है। आप आज सेनेट की बिल्डिंग में तो मौजूद ही हैं, लेकिन ये जो ऊपर आप देख रहे हैं इसमें ये जो वाइट हिस्से की जो शेड बने हुए हैं इसमें हर स्टेट का जो लोगो लगा हुआ है और उसके साथ साथ उस स्टेट का नाम भी लिखा हुआ है। तो अमेरिका की इस वक्त जो 50 के करीब रियासतें हैं उन तमाम रियासतों का जो है वो इसके ऊपर रूफ के ऊपर उनका नाम लिखा हुआ है, उनके कैपिटल का नाम भी लिखा हुआ है, और इसके साथ साथ वहाँ का जो कौमी जो आप कह सकते हैं जो फ्लैग है उनके स्टेट का फ्लैग उसकी निशानदाही भी वहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पर ये सेनेट की जो है वो असेंबली है नीचे और ऊपर उसकी गैलरी है, और उस गैलरी में ये बच्चे जो हैं वो स्टूडेंट हैं। और यहाँ पर अमेरिकन सेनेट के अंदर, सेनेट की ये जो बिल्डिंग है स्टेट सेनेट की बिल्डिंग, इसमें कोई भी शख्स जो है वो वहाँ पर आ सकता है और आकर जो असेंबली की
और ये सेनेट की जो कार्रवाई है वो देख सकता है। आज यहाँ पर क्योंकि हिंदू बरादरी के लिए, हिंदू कम्युनिटी के लिए जो है वो दिवाली की जो है रेजोल्यूशन यानी करारदाद पेश की जा रही है, तो इसलिए दुनिया भर से हिंदू कम्युनिटी की काफ़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे मुबस्सरीन यहाँ पर मौजूद हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। और ये जो हैं वो सेनेटर की फैमिली से हैं, और ये 3 बच्चे और इनका नाम जैसा कि लिया गया है, तो ये तीनों बच्चे और उसकी फैमिली के लिए यहाँ पर उनको गार्लैंड किया गया, यानी उनको वेलकम किया गया। यहाँ पर जो है वो सामने, जैसे मैंने आपको कहा कि स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे बैठे हुए हैं, और ये बच्चे आज जो हैं वो इस जो हमारी दिवाली की जो सेलिब्रेशन है इसमें भी शामिल हुए हैं। ये एक खुशाइंद बात है कि अमेरिका के अंदर जो है वो दीगर मज़ाहिब के लोगों को तमाम के अंदर हर सेनेटर मौजूद है। इन तमाम सेनेटर्स ये वीडियो के अंदर जो सेक्रेटरीज हैं, जो सेनेटर है वो बड़ी कुर्सी पे सिस्टम है वो उसके तब्दील करके जो है वो ये कुर्सी बेसिकली बड़ी है, और जो उसके उनके सामने बैठे While there were many who were not kind, I made it my mission all the time. Well, make it my mission for life to be kind and get along with people. That's what I try. We all need to get along. We serve on our city commission in Little Sturgis, Michigan, in Southwest Michigan. Our mayor ends every single meeting with 2 simple words. He says, "Be kind." So it's right. Yeah. The beady herb. इससे पहले जो आज की तकरीब शुरू हुई थी, उससे पहले रिसेप्शन हुआ था जो होस्ट किया था सेनेटर रॉबर्ट स्टेट में, और इसमें काफ़ी सारे लोग IT के साथ एक खास ऊपर लॉइस बिल्डिंग में, उसके अलावा भी हमें काफ़ी सारे और लोग आए हुए थे, और जो पिक्चर भी हुई, और उसके अलावा सेनेटर और उसके साथ ही किया गया, और जब असेंबली में हम लोग बिल्डिंग में जब रेजोल्यूशन पास हुआ इसके साथ साथ वो ग्रुप पिक्चर के साथ साथ और ये दिवाली Thank you very much. It's my distinct honor of recognizing 36 students from East Lansing. They're with the MSU School of Nursing, and they're in the East Gallery. Special guest to Senator Singh, please rise and be welcomed by the Senator.
the Michigan Board of Counseling, Courtney Hay, Eric Morsi. To the Michigan Natural Resources Commission, Peter Erdley. To the Michigan Board of Nursing, Marcia Dittmeyer. To the Michigan Veterans Agency Affair Director position, Brian Love. To the Michigan Veterans Facility Authority Board of Directors, David Rutledge. To the Michigan State Waterways Commission, Eric Kruger, Greg Lurkey. And a withdrawal of the Michigan Board of Counseling appointment for Courtney Hay, Eric Morsi. For the Committee on Government Operations. President recognizes Majority Floor Leader Singh. Thank you very much, Mr. President. I move that the Senate proceed to the order of messages from the House. Without objection, so ordered. Nice to see you. Great turnout. I just want to come up and say hello and thank you for what's that? Oh, great. Did you give it to some legislators? Today? Oh, wonderful. That's great news. If you could send me a copy too, that would be great. Thank you so much. President recognizes Majority Floor Leader Singh. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, I move that the Senate proceed to the order of resolutions. Without objection, so ordered. President recognizes Majority Floor Leader Singh. Mr. President, move the Senate. Mr. President, move that the rules be suspended to allow for the immediate consideration of Senate Resolution 79. Without objection, so ordered. President Senator Weber offers Senate Resolution number 79, a resolution to recognize the historic, cultural, and religious significance of the festival of Diwali. The rules have been suspended to allow for immediate consideration of the resolution, and there are no amendments pending to the adoption of Senate Resolution number 79. Questions on the adoption of Senate Resolution 79. Is there any discussion? The President recognizes Senator Weber. Thank you, Mr. President. I rise to speak in support of my resolution and ask that my remarks be printed in the journal. Without objection, so ordered. Colleagues, I invite you to join me today in recognition of Diwali and ask for your support of Senate Resolution 79 to acknowledge the historic, cultural, and religious significance of this wonderful festival. Diwali is celebrated by more than 1 billion Hindus, Sikhs, and Jains around the world each year, including our Michigan neighbors who identify with these traditions. Diwali, a shortened version of the Sanskrit word meaning row of lamps, is often translated into English as the Festival of Lights. Diwali is a time marked by qualities of togetherness, family, and community. It is a special time for charitable giving and selfless service. Diwali celebrants will light small oil lamps and place them around their homes with prayers for health, wealth, knowledge, peace, and valor. The rows of lamps are said to symbolize the light within the individual that rids the soul of the darkness of ignorance. This wonderful reminder that light triumphs over darkness, that good triumphs over evil, is a theme celebrated with many of our individual faith traditions. Hope is something we all share. Hope is a force of universal good. That is why I ask for your support of this resolution in our shared commitment to celebrate diversity of experiences and religious acceptance. I ask you to join me in recognition that Diwali's message of tolerance, compassion, and acceptance resonates with the ideals of the American spirit. Let us express together our respect and admiration for all those who celebrate Diwali throughout the world and in our own communities. Diwali begins November 12th of this year. May all who celebrate do so with peace and joy. President recognizes Senator Runestad. Thank you, Mr. President. When I was elected in 2018, I didn't have that diverse community in the House, and then when I was elected in the Senate, I found I had a very, very diverse community. And in particular,
a sizable Indian community. And I love learning about new cultures, and so I started attending events, Diwali events, Bollywood dance-offs, going to temple, and met the nicest group of people I think you could ever meet in the entire state of Michigan. The Indian community is so welcoming and so supportive that it's been a wonderful experience learning about the 28 different states and the different languages, the different religions within each of these. And I've had so many great friends, and it's been one of my absolute best memories, the best things I'll have with me when I leave this office. And I see so many of my friends here today. I've been very proud to be able to sponsor or co-sponsor Diwali. So again, I'm honored to be a part of this event. Thank you very much. Senator, would you like to mark Attorney General? Senator, would you like to mark Attorney General? That is witness order. Professor recognizes Majority Leader Singh. Thank you very much, Mr. President. I want to thank the senator from the 9th District for bringing this resolution up to commemorate Diwali and welcoming so many people here to our chamber in our capital who will be celebrating that holiday in the weeks to come. This holiday, as was mentioned, is a holiday that is very close to a number of religions in the South Asian area, specifically India, and so I just want to say on behalf of myself and our family to the people that are here and the people of Michigan, Happy Diwali. Senator, take part in the bill. Without objection, so ordered. Any further discussion? Seeing no further discussion, all in favor of the adoption of Senate Resolution 79 will say aye. Opposed will say no. Resolution is adopted. President recognizes Senator Weber. Thank you, Mr. President. Colleagues in the West and South Gallery, there is a very large group of Indian Americans that came up to Lansing from Troy and from other communities in Oakland, Macomb, and Wayne counties to see the Senate adopt Senate Resolution 79, the Diwali resolution. It brings me great honor to represent diverse communities as in Troy, Sterling Heights, and the greater Rochester area in my Senate district, and I ask that you welcome them to the Michigan Senate. Will the guests of Senator Weber please rise? Welcome to the Michigan Senate. President recognizes Majority Leader Singh. Thank you very much, Mr. President. I move the Senate proceed to the order of general orders. Without objection, so ordered. The President recognizes Majority Leader Singh. Mr. President, I move that the Senate resolve itself in the committee of the whole for the consideration of the general orders calendar. Majority Leader Singh moves that the Senate resolve itself to the committee of the whole for the purpose of considering items in the general orders calendar. Without objection, the Senate will resolve itself to the committee of the whole, and Senator Molina will preside. हाँ जी, तो वीडियो के आपने आप फिर देखिए जो अमेरिकन स्टेट है उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं और ये जो रेड कलर की जो पेंटिंग है उसकी जो है वो नाम है और उसकी जो कैपिटल का है और इसके साथ साथ जो उसका फ्लैग है और उसका जो निशान है वो यहाँ पर इसमें बिल्डिंग में मौजूद है। यानी कि अमेरिका की इस सेनेट बिल्डिंग के अंदर तमाम रियासतों का जो है वो यहाँ पर फ्लैग टाइप ही आप देख रहे हैं वो लिखा हुआ है। और ये खुशाइंद बात है कि अमेरिकन सेनेट की इस बिल्डिंग के अंदर, मिशिगन की इस सेनेट बिल्डिंग के अंदर जो है आज ये आप देख रहे हैं। आज है 1 नवंबर 2023 और आज की ये लेटेस्ट वीडियो
आप सबके लिए आज ही के दिन अपलोड की जा रही है। तो देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। मज़ीद ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ और इसके साथ साथ दुनिया भर में होने वाले जो एक्टिविटीज़ हैं। हाँ जी, तो हम हैं इस वक्त मिशिगन स्टेट बिल्डिंग में और ये बिल्डिंग जो है वो सेनेट बिल्डिंग है। और इस सेनेट बिल्डिंग में आज जो है वो दिवाली के हवाले से एक तकरीब हुई है और इसमें दिवाली की जो है वो प्रोक्लेमेशन की तरह जो यहाँ पे अनाउंस हुआ है। और एक उसके लिए हिंदू कम्युनिटी जो है जो मिशिगन स्टेट की जो हिंदू कम्युनिटी है वो यहाँ पर आई है। और उसमें जितने जो लोग थे, ये सारे जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं, दे आर इन सेनेट बिल्डिंग के फ्रंट पे खड़े हैं। और ये जो सेनेट बिल्डिंग है इसके सामने जो है ये सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। Let us know when your video is on, please. Okay, video's done. Happy Deepavali. Happy Diwali. Thank you.